Hello, 8th class. This is your math subject. Children, today we are going to start the new chapter, square and square roots. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start our chapter 3, square and square root. Squares. The square of a number is the product of the number with the number itself. Thus, if a is a number, then the square of a is a multiply a. इसको हम कैसे डिनोटेट कर सकते हैं? a square से. For example, 5 square equal to 5 multiply 5 equal to 25. Okay. स्क्वेयर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वेयर. आपको एक टेबल दी गई है यहाँ पर इसमें 1 से 20 तक नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर दिए गए हैं. फ्रॉम द अबाउट टेबल वी कंक्लूड दैट 1, 4, 9, 16 is to 400 are the squares of the number 1, 2, 3, 4 is to 20. Okay, such numbers are called square numbers or perfect square. Hence, a natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of any natural number. To check whether the given natural number is a perfect square or not, we find the prime factors of that number. If the prime factors exist only in pairs of identical factors, then the number is a perfect square. Otherwise, it is not a perfect square. See the example. Is 225 a perfect square? If so, find the number whose square is 225. So, resolving 225 into prime factors, हम इसके फैक्टर करते हैं. So, हमें कौन कौन से फैक्टर मिले? 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5. Clearly, the prime factor of 225 can be grouped into pairs of equal factors and no factor is left over. यहाँ पर इनके ग्रुपिंग हो गए हैं. Therefore, 225 is a perfect square. Now, 225 equal to 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5. So, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 square multiply 5 square. So, 3 multiply 5 का whole square equal to 15 का whole square. Hence, 15 is the number whose square is 225. Okay. Now, properties of perfect square. First point, the number which ends with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. Means जिन numbers के end में 2, 3, 7 और 8 होगा वो perfect square नहीं होंगे. For example, 62, 323, 547 and 1148 ends with 2, 3, 7 and 8 respectively. So these numbers are not perfect square. Okay. Now second point, the number of zeros at the end of a perfect square is always even. For example, 10 square equal to 100, 20 square equal to 400, 30 square equal to 900, 40 square equal to 1600. Okay. Third point, the square of an even number is always even. For example, 2 square equal to 4, 6 square equal to 36, 8 square equal to 64, 12 square equal to 144. Okay. Now fourth point, the square of an odd number is always odd. For example, 3 square equal to 9, 5 square equal to 25, 7 square equal to 49, 11 square equal to 121. Now fifth point, a perfect square except 1 leaves a remainder 0 or 1 when divided by 3. For example, 3 square equal to 9. Okay, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 multiply 3 plus 0. रिमाइंडर जो है यहाँ पर 0 या 1 होगा. So 4 square equal to 16 equal to 3 multiply 5 plus 1. Now 5 square equal to 25 equal to 3 multiply 8 plus 1. Thus, a square of a natural number other than 1 can be expressed as 3n or 3n plus 1. Okay. Now, sixth point, a perfect square except 1 leaves a remainder 0 or 1 when divided by 4. So, for example, 2 square equal to 4 equal to 4 multiply 1 plus 0, 3 square equal to 9 equal to 4 multiply 2 plus 1. Okay.
Now 4 square equal to 16 equal to 4 multiply 4 plus 0. Now 5 square equal to 25 equal to 4 multiply 6 plus 1. Thus the square of a natural number other than 1 can be expressed as 4n or 4n plus 1. Now 7th point, the unit digit of the square of a number can be determined if the unit digit of the numbers as are known. तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स. ओके, अगर हमारी यूनिट डिजिट पे 0 होगा तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे भी 0 होगा. फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, 30 स्क्वायर इक्वल टू 900. ओके, आपको ये टेबल ऑब्जर्व करनी है. नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.a. ए पार्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ 3.1 इज. सो फर्स्टली हम 31 मल्टीप्लाई 31 करेंगे एंड 2 के पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, 2 डिजिट को काउंट करके हम डेसिमल पुट करेंगे. सो आवर आंसर इज 9.61. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. Now question 2, see in your book the least number by which 605 must be multiplied so that it becomes a perfect square. So resolving 605 into prime factors, so we find 11, 11, 5. Okay. Now हमने prime factor find किए, so 605 equal to 11 multiply 11 multiply 5. Now grouping करेंगे, so grouping the prime factors into pairs of equal factors, we find that 5 is left. 11 के तो हमारे यहाँ ग्रुप बन गए हैं बट 5 हमारा लेफ्ट रह गया. ओके, thus to get the perfect square 605 should be multiplied by 5. सो हमें 5 से और मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर. तो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. फर्स्ट पॉइंट ही हमारा था कि हमारे नंबर्स के एंड में 2, 3, 7 और 8 अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो इन दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज 196. बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, 196 इज द परफेक्ट स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अभी हमने एक टेबल ऑब्जर्व करी थी प्रॉपर्टीज में. सो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट, 7. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not a square of an odd number. So B option is correct, 2704. Okay, now B part, solve the following. First question, find the squares of the following numbers. A part is 7. तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49 इज आवर आंसर. नाउ बी पार्ट 13. तो 13 का हम स्क्वायर करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 169 इज आवर आंसर. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now question number 2, see in your book by using prime factorization check if the following numbers are perfect square. Okay, A part is 484. Resolving 484 into prime factors, तो हमें कौन से फैक्टर्स मिले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11. ओके, नाउ ग्रुपिंग हम करेंगे. सो ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, वी फाइंड दैट नो फैक्टर आर लेफ्ट. कोई भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं बचा है नंबर, हमारे ग्रुपिंग हो गए हैं. सो 484 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ बी पार्ट इज आवर 841. सो रिसॉल्विंग 841 into prime factor, so we get 29 and 29. Okay, now grouping the prime factor into pairs of equal factors, so we find that no factors are left. So 841 is a perfect square. So E part 11,250. So firstly find the prime factors. So prime factors are 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. Now grouping the prime factors into pairs of equal factors, we find that one factor 2 is not in pair. Okay,
Therefore, 11,250 is not a perfect square. Now, similarly, you have to solve other part of this question. Now, properties of perfect square. First point, the number which ends with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. मीन्स जिन नंबर्स के एंड में 2, 3, 7 और 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल 62, 323, 547 and 1148 ends with 2, 3, 7 and 8 respectively. So these numbers are not perfect square. Okay. Now second point, the numbers of zeros at the end of a perfect square is always even. For example, 10 square equal to 100, 20 square equal to 400, 30 square equal to 900, 40 square equal to 1600. Okay. Third point, the square of an even number is always even. For example, 2 square equal to 4, 6 square equal to 36, 8 square equal to 64, 12 square equal to 144. Okay. Now fourth point, the square of an odd number is always odd. For example, 3 square equal to 9, 5 square equal to 25, 7 square equal to 49, 11 square equal to 121. Now fifth point, a perfect square except 1 leaves a remainder 0 or. Now D part is our 2352. Okay. So firstly find the prime factors. So prime factor करके हमारा क्या आ गया, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 multiply 7. Now अब grouping करेंगे. So grouping the prime factors of this number into pairs of equal factors, we find that one factor of 3 cannot be paired. 3 का जो है वो pair नहीं बन रहा है. Okay. Thus to get a perfect square, we multiply 2352 by 3. सो न्यू नंबर हमारा क्या आ गया, 7056. ओके. नाउ अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर. ओके. नाउ होल स्क्वायर करेंगे इसका, देन मल्टीप्लाई करेंगे. सो 84 स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा. Hence the number whose square is new number is 84. Okay. Now similarly you have to solve other part of this question. Now question number 4, see in your book, find the least number by which the given number should be divided to get a perfect square number. Okay. In each case, find the number whose square is the resulting new number. So A part is our 216. Now firstly find the prime factors. So 216 के prime factor क्या क्या है, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. Okay. Now grouping करेंगे. So grouping the prime factor of 216 into pairs to equal factors, we find that 2 multiply 3 cannot be paired. Thus we divide 216 by 6 to get a perfect square. Okay. Now new number हमारा क्या आ जाएगा, 216 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे. So 36. Now 36 के हम फैक्टर्स करेंगे, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर. ओके. नाउ होल स्क्वायर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर 2. ओके. सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 6 स्क्वायर हमारा आ जाएगा. हेंस द नंबर हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 6. ओके. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now question number 5, see in your book, find the smallest square number that is divisible by 3, 4, 5 and 6. So in this question the least number that is divisible by 3, 4, 5 and 6 is their LCM. So firstly find the LCM. So LCM of 3, 4, 5 and 6 is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 equal to 60. Okay. Because LCM of 3, 4, 5, 6 not in pairs, so we multiply 3 multiply 5 to make it perfect square. Because यहाँ पे हम grouping करेंगे, so 3 and 5 हमारे कम है. Okay. Now 3 and 5 से हम multiply कर देंगे. Hence required square number which is perfectly divisible by 3, 4, 5 and 6 is 60 multiply 3 multiply 5
So our answer is 900. Okay. Now similarly you have to solve question number 6. Now question number 7, see in your book, by using properties of perfect squares, show that the following numbers are not perfect square. Also give reason. आपको reason भी साथ में देना है. Okay, A part is our 1857. So the number 1857 is ends with 7. 7 से खत्म हो रहा है. Okay, so 1857 is not a perfect square, क्योंकि हमने properties में पढ़ा था ना बेटा. Now B part is 4298. So the number 4298 ends with 8. So 4298 is not a perfect square. Now see the C part, 56,000. So the number of zero in 56,000 are not even. So 56,000 is not a perfect as above. Okay, जैसे हमने पहले पढ़े हैं. So similarly you have to solve other part of this question. Now question number 8. See in your book which of the following are squares of odd numbers. So आपको इसमें find करना है कि कौन सा square odd numbers के हैं. Okay. First question is our 169. Because 169 is an odd number, therefore 169 is the square of odd numbers. Now B part आप देखेंगे 625. So 625 is an odd number, therefore 625 is the square of odd number. Okay. Now C part 1296. So this number is an even number. Okay. Now therefore 1296 is not the square of odd number. Okay. Similarly you have to solve other part of this question. Now D part is our 2352. Okay. So firstly find the prime factors. So prime factor करके हमारा क्या आ गया, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 multiply 7. Now अब grouping करेंगे. So grouping the prime factors of this number into pairs of equal factors, we find that one factor of 3 cannot be paired. 3 का जो है वो pair नहीं बन रहा है. Okay. Thus to get a perfect square we multiply 2000. Now question number 10, see in your book what will be the unit digit of the square of the following numbers. Okay, इसमें आपको unit digit पे बताना है कि square करेंगे तो क्या कौन सा number आएगा. Okay. Now we know that the square of a number with unit digit 1 or 9 has unit digit 1, 2 or 8 has unit digit 4, 3 or 7 has unit digit 9, 4 or 6 has unit digit 6, 5 has unit digit 5. Okay, आपको ये ध्यान रखना है. So A part is our 61. So 61 के unit digit क्या है, 1 है. So unit digit of square of 61 is 1. Now B part 399, unit digit क्या है इसकी, 9 है. Okay. Now unit digit of square of 399 is 1. Now C part 1753. So units digit इसकी 3 है. So units digit of square of 1753 is 9. Okay. Now D part, unit digit of 1955 is 5. So units digit of square of 1955 is 5. Okay. Now similarly you have to solve other part of this question. Children, now your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you, students.